Right now, who is unmute? साजल, वसीम, आप अपने आप को बार बार अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? Okay, sorry, ma'am. Yes, please keep yourself on mute. You can only unmute yourself when you have any question to ask. Okay. So good afternoon, ma'am. Happy Women's Day. Thank you, Karthik. First slide, someone please read what is an adjective. An adjective is a word that modifies, gives more information about a noun or a pronoun. Tall man, old house, red car. Yes. So guys, as I have already told you, an adjective is a word that modifies a noun or pronoun. फॉर एग्जाम्पल टॉल मैन, ओल्ड हाउस, रेड कार. सो यहाँ पे मैं किसी मैन की बात कर रही हूँ. सो आई एम सेइंग दिस मैन इज टॉल. सो टॉल क्या है? उसकी क्वालिटी है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हाउस इज ओल्ड. तो उसकी क्वालिटी क्या है? वो ओल्ड है. ऐसे ही न्यू हाउस भी हो सकता है. रेड कार, व्हाट इज द color or the quality of the car? It's red car. Next slide, please read. Degrees of Degrees of adjectives. An adjective can exist in three forms: positive, comparative, and superlative. The positive form is the base form of the adjective. It denotes the mere existence of a quality. The comparative form expresses a higher degree of some quality. The superlative form expresses the higher. Karthik, why you are on mute? बोलते बोलते आपने म्यूट कर दिया. What is happening? Someone What, ma'am? please read. आपने बोलते बोलते म्यूट क्यों कर दिया? पढ़ते पढ़ते. Ma'am, I spoke completely, no? I read completely, no? अच्छा, I thought you were on comparative. Okay, guys, so काफी जल्दी बढ़ गया. So, guys, an adjective can exist in three forms. Adjective की three forms होती हैं. Three forms को समझने की कोशिश करिए. First form is called positive, second is called comparative, and third is called superlative. ठीक है? So, positive form is the base form of the adjective. It denotes the mere existence of a quality. Second, comparative. This form expresses a higher degree of some quality. And the third, which is superlative form, it expresses the highest degree. So positive degree में एक मैं normally adjective रखूंगी, for example tall. Comparative degree में जब मैं दो लोगों को या दो चीजों को compare करूंगी तब मैं comparative degree का use करूंगी. For example, Reena is taller than Meera, for example. राइट. एंड थर्ड जो मेरी सुपरलेटिव डिग्री होगी उसमें मैं ना ही किसी को कंपेयर करूंगी, मैं सीधा एक पर्सन को बाकी सबसे बेस्ट बोलूंगी. सो मतलब एक इट्स लाइक उसे हम तार पे बिठा रहे हैं. सो हम उसे बोल रहे हैं इट्स द सुपीरियर. सो फॉर एग्जांपल टॉलेस्ट. ओके, एनी क्वेश्चंस इन द 3 degrees of adjective? All good? Yes, hold ma'am. your horse नहीं होता क्रिस्टी, hold your horses होता है. And who owner you guys are talking about? Next slide. So now we have irregular adjectives. Someone please read. Hello, ma'am. Yes, Shobha. Happy Women's Day, ma'am. Wish you the same. Okay, ma'am. A small number of adjectives are irregular in a way they make comparative and superlative forms. The normal, regular way to make comparative and superlative adjectives is to add er, est, or use more, most like this: big, bigger, biggest, expensive, more expensive, most expensive. Irregular adjectives use completely different forms. Note,
However, that some adjectives can be both regular and irregular, sometimes with a slight change in meaning. Right. So guys, irregular are the adjectives जिनकी regular forms नहीं होती. Their second and third forms are different. For example, हम जब कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं हम उसमें ER यूज करते हैं, और जब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं हम उसमें EST यूज करते हैं. ठीक है, इनको हम बोलते हैं रेगुलर एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जांपल, बिग, बिगर, बिगेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, लो, लोअर, लोएस्ट. ओके, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. तो इनमें दोनों फॉर्म्स में क्या हो रहा है, एक में ER लग रहा है कंपैरेटिव में और एक में EST सुपरलेटिव में. बट कभी कभी वर्ड्स हमारे जब बड़े होते हैं, कोई वर्ड जैसे टॉल छोटा है, ठीक है, तो जब हमारे पास कोई बड़ा वर्ड आता है जिसमें मोर देन टू सिलेबल्स होते हैं, 2 और मोर देन 2 सिलेबल्स, तब हम वहां पे मोर और मोस्ट लगाते हैं इंस्टेड ऑफ ER एंड EST. फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंसिव. इन दिस वर्ड गाइज वी हैव 3 syllables. ठीक है, टॉल, टॉल में एक ही सिलेबल है. एक्सपेंसिव 3 syllables है, तो उसमें मैं एक्सपेंसिवर, एक्सपेंसिवेस्ट नहीं लगाऊंगी, मैं इसमें लगाऊंगी मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव. राइट. देन irregular adjectives use completely different forms. ये तो हमने रेगुलर पढ़ लिया कि रेगुलर एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ER, EST, मोर और मोस्ट लगता है. इरेगुलर होते हैं जो चेंज होते हैं, so sometimes with a slight change in meaning. For example, can anyone give me an example of irregular adjective? Good, Yeah. better, best. Yes, good, better, best. So guys, good, gooder, goodest नहीं होता, good, better, best होता है. So ये हमारा irregular adjective है. Shameem, you are raising your hand. What happened? Do you have any question? Students, if you do not have any question, please do not unmute yourself or raise your hand. Perfect. Moving to the next slide. Please read regular adjectives. Regular adjectives are simple. They describe nouns and usually come right before those nouns. Example: big bus, tinny mouse, pleasing person. Yes. So guys, regular adjectives are simple. They describe nouns and usually come right before those nouns. So regular adjectives हमारे noun को describe करते हैं और noun से पहले use होता है. For example, I have a big house, or this is a big bus. This is a tiny mouse. Pleasing. He is such a pleasing person. So हमेशा ध्यान रखिए कि रेगुलर जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन से पहले यूज करते हैं. यू आर अ ब्यूटिफुल गर्ल, ही इज अ हैंडसम मैन, शी इज अ ग्रेट डांसर. राइट. सो ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं. Paras, if you have network connection, please leave the session. Please do not disturb. What is the comparative form of pleasing? More pleasing, most pleasing. Okay, ma'am. If you are confused, just आप syllable check करिए कितने syllable है. Pleasing 2 syllables हैं इस word में, तो मैं pleasing, pleaser, pleasest नहीं लगाऊंगी, आपको खुद ही सुनने में अजीब लग रहा होगा. तो यहाँ पे more और most लगेगा. ठीक है. Beautiful में भी beautiful 3 syllables हैं, more beautiful, most beautiful. जिस वर्ड में 1 syllable होता है सिर्फ उसमें हम ER, EST लगाते हैं. So guys, we have a very good chart here for positive, comparative and superlative degree. Sad. Sad क्या है? Adjective है. किसी को हम किसी की क्वालिटी बता रहे हैं. For example, today my friend is sad. उसकी क्वालिटी में बता रही हूँ, तो उसकी comparative degree होगी sadder और थर्ड हो गई saddest, because वर्ड में एक ही syllable है sad. Happy, happy. So happier, happiest. यहाँ पे एक चीज नोट करिए, जो भी वर्ड्स Y पे एंड होते हैं उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में I आता है, Y नहीं आता. Happier, happiest.
unusual, unusual, 3 syllables हैं. More unusual, most unusual. Okay? It was an unusual incident. Unusual means not usual, not common. जो चीज कभी कभी हमारे हो जाता है ना, कभी कभी अनकॉमन कोई चीज हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं good, better, best. Good, better, best irregular adjective है. Easy? Any questions? Moving ahead. Someone please read. The comparative form is used to compare two people or things. Taru, please speak a bit louder. Keep your mic closer to your mouth. The comparative form is used to compare two people or things. Look at these examples. Neptune is big. It's bigger than Earth. This puzzle is easy. It is easier than the last one. The film was not interesting. The book was more interesting than the film. In the above example, bigger, easier, and more interesting are comparative adjectives. Guys, 1 second. I'm typing something. कुछ लोगों को कुछ काफी गलतफहमी है. Okay, the comparative form कहाँ यूज होती है? जब हम दो चीजों को या दो इंसानों को कंपेयर करते हैं. जैसे मैं आपसे बोलूं, आप और आपके भाई में ज्यादा लंबा कौन है? तो आप कहेंगे मैम मेरे बड़े भाई ज्यादा लंबे हैं. So what will you say? My elder brother is taller than I. मुझसे ज्यादा लंबे हैं. मैं आपसे बोलूं आप दोनों बहनों में से ज्यादा लंबे बाल किसके हैं? तो यू विल से मैम आई हैव लॉन्गर हेयर देन माय सिस्टर. ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो लोगों को कंपेयर कर रही हूँ. अब मैं दो चीजों को कंपेयर करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं इनमें से बोलूं इनमें से ज्यादा क्यूट कौन सा टॉय है, तो आप बोलेंगे मैम द लेफ्ट वन इज क्यूटर देन द राइट वन. राइट, सो क्यूटर क्या हो गई हमारी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री हो गई. So we use comparative degree of adjective to compare two things or two people. For example, we are here comparing two, what do we call these planets, Neptune and Earth. So what I'm saying, Neptune is big, Neptune bada hai, but Earth is bigger than Neptune. No, it is bigger than Earth, sorry. ये Earth से भी बड़ा है. Okay, so यहाँ पे वैसे होना चाहिए था Earth is big but Neptune is bigger than Earth. तो हम Neptune को और Earth को compare कर रहे हैं. Now let's come on the puzzle. So every day I solve a puzzle. This puzzle is easy. Today this puzzle is easy. It is easier than the last one. तो जो मैंने कल puzzle solve किया था उससे ज्यादा easy है, means easier. Film. Now I'm comparing a film to a book. The film was not interesting. The book was more interesting than the film. For example, guys, there are many movies that are documented on a book. For example, Gangubai, it is also based on a book called The Mafia Queens. Right? So if you have read the book, तो आप कंपेयर कर सकते हैं ना. आपने बुक रीड करी, उसके बाद आप मूवी देखने गए, तो आप क्या सोच रहे हो, यार मूवी इतनी अच्छी नहीं थी, बुक ज्यादा इंटरेस्टिंग थी. So the book was more interesting than the film. So THAN then हम use करते हैं comparison के लिए. Please do not get confused with THEN. THEN then होता है फिर. Okay, so it's THAN. Okay, so the above examples, bigger, easier, and more interesting, are comparative degrees. Next slide. Please read. Who's reading? We use comparative adjectives to describe people and things. First, this house is certainly better, but it's much more expensive. Here, although it hasn't been mentioned, but it is clear that this house is being compared to a set of other houses. Second, I am feeling happier now. I am feeling happier than how I was feeling before. Third one, we need a bigger garden.
We need a bigger garden than our current garden. Okay, so we use comparative adjectives to describe people and things. मैं already आपको बता चुकी हूँ. So guys, ये घर हमारे पुराने घर से better है. तो better क्या है? Comparative degree. ठीक है, हम किसी भी चीज में बेटर लगाते हैं कब? जब हमें किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे बाल पहले अच्छे लग रहे थे, तुमने कटिंग करा ली, अच्छे नहीं लग रहे. सो योर हेयर वर बेटर अर्लियर. ठीक है, हैप्पियर, आई एम फीलिंग हैप्पियर नाउ, मतलब मैं पहले खुश नहीं थी, अब नाउ आई एम फीलिंग हैप्पियर. वी नीड अ बिगर गार्डन. हमारे पास बड़ा गार्डन है लेकिन हमें इससे भी बड़ा गार्डन चाहिए. सो बिगर गार्डन. रीड. Who's reading? To compare two different things, we use then when we want to compare one thing with another. Example, Nina is 2 years old than her sister. Example 2, New York is much bigger than Dallas. Remember, although we use comparative adjective when talking about two things, not three or more things. Exactly. One or both of these things may be a group of things. Example, Mount Everest is higher than all other mountains. All other mountains is group here. Yes. So guys, हम यहाँ पे जो comparative degree यूज करते हैं वो दो चीजों में यूज करते हैं. ऐसा नहीं है 3-4 चीजों में. ठीक है, लेकिन हम इनको अगर कोई ग्रुप होगा उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं. जैसे एक चीज को हम एक ग्रुप के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो हम एक और दो, बिकॉज कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, तो दैट्स व्हाई हम उसको यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन ऑल अदर माउंटेन्स. माउंट एवरेस्ट बाकियों से ज्यादा ऊंचा है. ऑलराइट, किसी को कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री में क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क. He is taller than me or taller than I? आई, हमने वो पढ़ा था, रिमेम्बर तरूब, पोजेसिव एडजेक्टिव्स में 2, Yes, 3, ma'am. 1. पहले हम 2 की बात करते हैं, फिर हम थर्ड पर्सन पे आते हैं, फिर फर्स्ट पर्सन पे आते हैं. No, ma'am. I am saying he is taller than me or he is taller than I. बोथ आर एक्सेप्टेबल. फॉर्मल में आई चलता है, इनफॉर्मल में आप मी का यूज कर सकते हो इफ यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड. Okay, ma'am. ओके, राइट. सो गाइज, आई बिलीव और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है. इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज फील फ्री टू आस्क. Okay, so let's quickly start with the quiz. In India, May is dash, then June. May is hotter, hottest, hot, hotter. Pick the correct option. Ajmol, please answer. Yeah, ma'am. In India, May is hotter than June. Fourth one is Yes. right. So guys, इंडिया में क्या होता है, मई जो महीना होता है वो जून से ज्यादा गर्म होता है. मई, जून, जुलाई, बिकॉज जून में थोड़ी बहुत बारिशें पड़ती हैं तो थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाता है टेम्परेचर. मई में बहुत गंदी गर्मी पड़ती है. सो व्हाट वी आर सेइंग, वी आर कंपैरिजन मई टू जून. हम बोल रहे हैं मई इज हॉटर देन जून. HOTTER. काफी स्टूडेंट्स ने करेक्ट रिस्पॉन्स दिया है. वंदना, दीपाली, दीपक, बबीता, मलकित सिंह, भावना. ध्यान से आंसर करिए स्टूडेंट्स. राइट, सो नेक्स्ट स्लाइड.
Anne is dash than her husband. Is good looking, good, more looking, or better looking? Dipali, please answer. Anna is the better looking than her husband. Yes, so Anne is better looking. So guys, हम यहाँ पे compare कर रहे हैं Anne को, जो एक लड़की है, उसके husband से. कभी कभी ऐसा होता है जब हम शादियों में जाते हैं, हम जज करते हैं कि लड़की ज्यादा अच्छी है, नहीं लड़का ज्यादा अच्छा है. तो ये जो ज्यादा अच्छा होता है, ये कंपैरिजन ही हो रहा है ना, कि लड़का ज्यादा अच्छा है, लड़की ज्यादा अच्छी है. सो इट इज कॉल्ड बेटर लुकिंग. एंड इज बेटर लुकिंग देन हर हस्बैंड. एंड अपने हस्बैंड से ज्यादा बेटर लुकिंग है. गुड लुकिंग का यूज होगा व्हेन वी आर नॉट कंपेयरिंग एनी पर्सन, वी आर जस्ट सेइंग दैट ऋतिक रोशन इज वेरी गुड लुकिंग पर्सन, right? But if I'm comparing Hrithik Roshan to Tiger Shroff, then I will say that Hrithik Roshan is better looking than Tiger Shroff. Okay. Next slide. This building is dash any other building. Tall than, tallest than, taller than, the tallest. Karthik. The building is taller than any other building. Yes, the building is taller than any other building. And sometimes Karthik, I feel like you and I have, like, we share same opinions about few things. Most of the things, I would say. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. No problem. And I think you should have listened to my speech in earlier class. I spoke about a woman a lot. Okay. You can do that in this class as well. No problem. In the evening, maybe evening session. I spoke really 10 to 15 points. Means, yeah, so many controversial points I spoke. Okay. So guys, I'm comparing a building, for example, Burj Khalifa. Let's talk about Burj Khalifa. The Burj Khalifa is taller than any other building. So Burj Khalifa दुबई में और किसी बिल्डिंग से लंबी है, right? ऊंची है. Next slide. Life in the desert is dash than life in the mountains. As dreary as the dearest, or drearier. I did not see Dan, ma'am. I chose the wrong option. No problem. That's why I always tell you to look properly. Komal, please answer. Life in the desert is drearier than life in the mountains. Yes. I believe यहाँ पे spelling थोड़ी गलत है इसकी. ऐसे spelling होती है DREARY. तभी मुझे पढ़ने में दिक्कत होती. So guys, the meaning of this word is, it's an adjective. It means depressing, dull, and bleak. ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग. तो गाइस ऑब्वियसली अगर आप डेजर्ट जाएंगे राजस्थान वगैरह, तो वहां आपको लगेगा कि यार बहुत लाइफ बहुत डिप्रेसिंग है. मींस जहां पानी नहीं है, अच्छा मौसम नहीं है, वहां क्या ही एंजॉय करेंगे. एंड ऑन द अदर हैंड, इफ यू गो टू माउंटेन्स, यू विल फील सो लाइवली. Mountains, they have natural beauty. The weather in the mountains is always good, so you will feel, yeah, this is something lively. Right? So dreary and lively, they are kind of opposite words. Full of life and dullness, full of dullness. Ajmol, Karthik, Firoz, Reena, Munna, Svoshri, incorrect response. Next slide. Someone please read.
when we want When to we want to describe how something or someone changes, we can use to comparative with and. As for example, one, the uncle got bigger and bigger. Oh, sorry, ulcer. The ulcer got bigger and bigger. The second, everything is getting more and more expensive. Third, Aunt Mary is looking older and older. Yes, so guys, in हिंदी also हम कहते हैं ना यार, ये चीज और मतलब अल्सर होती है, एक बीमारी होती है. So वो जैसे we can say pimple. For example, a pimple, it's getting bigger and bigger. ये pimple जो है ना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. So that's the same thing. So आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस चीज को emphasis कर रहे हैं. So you are describing how something or someone changes. तो यहाँ पे आप 2 बार same comparative degree का use कर सकते हैं with the conjunction and. The ulcer got bigger and bigger. For example, cancer भी होता है, वो बढ़ता जाता है. So everything is getting more and more expensive. महंगाई बढ़ती जा रही है, right? Aunt Mary is looking older and older. Easy? It exists in the Telegram world. What exists, Ishan? What we are talking about? Telegram का अपना कोई world है. Telegram, I don't think it's a very known app. मैंने first it's one time of the social media platforms. That's it. Yeah, I know it's a social media platform. I'm saying it's not that common or that popular. Like we have Instagram, WhatsApp, Snapchat, Facebook. These 4 to 5, Twitter. These are more common than any other platform. And trust me, Telegram मैंने first time यही सुना था Hello English में, when Sachin told me about this group. I suggested him to go for group, but of course no one was interested in giving their number, so that's why he found this Telegram. So I don't think it's that big that it will give something to the organized globalization. But मुझे समझ में नहीं आया what he's talking about, Ishan. Some words are not real words. Next slide, please read. Who's reading? If there is no one, I can read. Go ahead. We often use the with comparative adjectives to show that one thing depends on another. Example: when you work hard, it is more rewarding. The harder you work, the more rewarding it is. Example 2: when they climbed higher, it got colder. The higher they climbed, the colder it got. Yes. So we often use the with comparative adjectives. हम the का use करते हैं, क्यों करते हैं? To show that one thing depends on another. For example, आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही फल मिलेगा, right? So the harder you work, the more rewarding it is. ठीक है? आप जितना ऊपर क्योंकि माउंटेन्स में आप जितना ऊपर ऊपर जाते रहेंगे ठंड बढ़ती जाती है. So the more you climb, or the higher they climb, the colder it got, right? So when they climbed higher, it got colder. Easy? Ma'am, you know, I had my English exam on last Friday and I performed very well because I know many things in my syllabus because I attended your classes. Thank you so much. You're most welcome. Ma'am, Yes. reward means ma'am हिंदी में फल मिलना किसी चीज का, रिवॉर्ड. ठीक है? Thank you, ma'am. No problem. Next, when, please read. What, ma'am? These many explanation slides. When we compare two objects, person, qualities, degrees, etc., we maybe use the comparison of equality. बी नहीं है, जरूरी मे के साथ हमेशा बी लगे. We may use. This is formed by the use of as plus adjective, adverb plus as. Your house is as large as mine. फिर से पढ़िए योगिता, लास्ट वाला. Your house is as large as mine.
यस, आपने लार्जर पढ़ा था। और ये एडजेक्टिव नहीं है, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, डी बिल्कुल साइलेंट होता है। एजेक्टिव पढ़िए इसको, एडवर्ब एडवर्ब पढ़ा जाएगा, एजेक्टिव। कुछ कुछ चीजें समझ नहीं आती इंग्लिश की। सो गाइस, व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, टू पीपल, या किसी दो लोगों की क्वालिटीज, तो हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन यूज करते हैं ऑफ इक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहना है तुम्हारा घर इतना ही बड़ा है जितना मेरा घर है, या तुम्हारे बाल इतने ही लंबे हैं जितने मेरे लंबे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, योर हाउस इज एज लार्ज एज माइन। यहाँ पे लार्जर नहीं यूज होगा, ठीक है। सो एज का हम यूज करेंगे यहाँ पे, एज long as mine, your hair is as long as mine, your complexion is as white as mine, yeah, as bright as mine. Okay, now we have a chart in which we have adjective type, that is short है तो one syllable, old long, तो ये हमारा हो गया older longer, ये मैं आपको already बता चुकी हूँ। adjectives ending in one vowel, one consonant भी हमारे क्या होते हैं, big, like big, bigger, biggest, hot, hotter, hottest। टू syllables आते हैं जिसमें y होता है, वो किससे चेंज हो जाता है, I से। फॉर एग्जाम्पल, ugly, uglier, noisy, noisier, messy, messier। लॉन्गर एडजेक्टिव होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा syllables होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केयरफुल, उसमें लग जाता है more और most, expensive, more most, beautiful, more most। With some two syllable adjectives, both er and est endings and more most are possible। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें आप more most भी लगा सकते हैं, er est भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, polite, politer, politest भी हो सकता है, more polite, most polite भी हो सकता है। common, commoner, commonest भी हो सकता है, more common, most common भी हो सकता है। With some two syllable adjectives, only an er est ending is possible। इसमें हम more most नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, narrow, narrow, although इसमें दो syllables हैं, but यहाँ पे more नहीं लगेगा। narrower, narrowest। For example, this alley is narrower than the other one। simple, the session is simpler than the previous one। clever, a fox is cleverer than crow, for example। okay, next, no other country sells dash cell phones as India does, more as many। Globalization says the economy, science, social of every country have international influence। Telegram is also part of science and technology world। टेलीग्राम पे चर्चा हो क्यों रही है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। Yes, Bhavna, you are right। Next we have Pratap, please answer। Meera, Yes, ma'am. No other country sells as many cells. Meera, your voice is not audible। No other country sells as many cell phone as India does। Yes, so as many cell phones। So और कोई कंट्री इतने मोबाइल नहीं बेचती जितने इंडिया में बिकते हैं मोबाइल, या इंडिया बेचता है, ठीक है। Chinese is dash than English, difficult, more difficult। Pratap, are you there? Sajil, सारे सो रहे हैं क्लास में। Suvoshri, Chinese is more difficult than English। yes, so guys, English is also difficult, but Chinese is more difficult। I think her grandfather must be dash than her grandmother, older, elder। Taroop, I think her grandfather must be older than her grandmother। मुझे लगता है उसके दादाजी उसकी दादी माँ से ज्यादा बड़े होंगे एज में। सो
older, not elder. Okay, old हम age के लिए use करते हैं. उम्रदराज मैम. Pick the correct option. The faster you drive, the more dangerous it is. The faster you drive, more dangerous it is. The faster you drive, the more dangerous it is. The faster you drive, the more dangerous it is. Vishaka, please answer. Yes, ma'am. The faster you drive, the more dangerous it is. Yes. जितना आप तेज गाड़ी चलाएंगे उतना ही dangerous है. Okay, so the faster you drive, the more dangerous it is. दोनों में comparative degree use हुई है. Next, how is your mother today? Is she any good or is she any better? Yogita. How is your mother today? Is she any better? Is she any better? So guys, for example, your mother is not keeping well. तो कल उनकी तबीयत खराब थी, तो आज आप क्या पूछ रहे हैं? आज आपकी मम्मी better है. Is she any better? Not any good. Next, I think you require a DASH diet. What you eat right now is all junk. You need most nutritious or more nutritious diet. Ajmol. Yeah, ma'am. I think you require more nutritious, ma'am. Nutritious. बोलिए. Nutritious. Nutritious diet. What you eat right now is all junk. Yes, तो आपको और nutritious diet की जरूरत है. जो भी अभी आप खा रहे हैं ये सारा गंद है, junk है, कूड़ा है. Ma'am, what does it mean? Nutritious. अजमोल, न्यूट्रिशन होता है हमारे खाने में. जैसे पनीर में न्यूट्रिशन होता है, दूध में होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में न्यूट्रिशन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशियस डाइट हम बोल रहे हैं जिस डाइट में न्यूट्रिशन हो. Okay, thank you. हिंदी तो मुझे नहीं पता न्यूट्रिशन की. पोषण आई थिंक. पोषण. या मैम, हम ये भी तो कह सकते हैं कि आपको सबसे अच्छी डाइट की जरूरत है. मोस्ट न्यूट्रिशियस डाइट भी कह सकते हैं. कंपैरिजन नहीं करेंगे ना फिर वहां पे हम. यहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हो कि अभी आप जो खा रहे हो वो सारा कूड़ा कबाड़ है, आपको इससे बेहतर डाइट की जरूरत है. तो हम कंपेयर कर रहे हैं. मोर न्यूट्रिशियस डाइट आपको लेनी चाहिए. ओके, थैंक यू मैम. मैं ये बोल सकती हूँ दैट पनीर इज द मोस्ट न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोडक्ट. ये मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं पनीर को कंपेयर नहीं कर रही किसी से. मैं सिर्फ बता रही हूँ कि पनीर में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है. ओके, गॉट इट मैम. या, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट, she is dash her old sister. She is as pretty as, more pretty as pretty like, as prettier as. जिशा, न्यूट्रिशन और हाइजीनिक में बहुत डिफरेंस है. हाइजीनिक होती है साफ सुथरी. तो साफ सुथरी डाइट कौन लेता है? बैलेंस्ड डाइट.
बैलेंस डाइट इज समथिंग न्यूट्रिशियस जिसमें आप ग्रीन वेजिटेबल्स भी रख रहे हो अपने, थोड़ा सा मीट भी है, पनीर भी है, तो उसको हम न्यूट्रिशन से बोलते हैं. Hygiene can we say like a cleanliness? हाँ, exactly what I'm saying. Hygiene, Nutritious means cleanliness. efficient as food, nourishing, right? Full of nourishment, full of nutrients, nutritive. Hygienic हो गया clean. For example, my room is always hygienic. The washroom is so hygienic. You must have got confused. कोई मैम कर रहा था अभी, योगिता? Was it you? Dipali, please answer. She is as pretty as her older sister. वो उतनी सुंदर है जितनी उसकी बड़ी बहन. So अजमोल, आप आज की बात कर रहे हैं और आप past tense का यूज कर रहे हैं. Today I made many mistakes. क्या होगा यहाँ पे? Today I have made, present perfect. The more he reads, the dash, the more he reads, the dash, the less he understood. Past it. The more he read, the less he understood, the least he understood. Karthik, please answer. Asnam, the more he, I think the more he reads, not read. The more No, he it's reads. past. The more he Oh, read. sorry. The more he read, the less he understood. Okay, sorry. Yes, the sentence is in the past, guys. जितना उसने पढ़ा, उतना ही कम उसे समझ में आया. As he grew older, he became wiser. Can also be written as the wiser he became, the older he grew. He's as old as how wise he is. He's wiser than how old he is, or the older he grew, the wiser he became. He is superior than me, Manjot, not to me. Komal, please answer. The older he grew, the wiser he became. Yes, the older he grew, the wiser he became. होता है ना, कभी जितना हमारी एज बढ़ती जाती है हम उतने ही समझदार होते जाते हैं. So यहाँ पे हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे वो बढ़ता गया वो समझदार होता गया. अगर कोई क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, feel free to ask. One student is asking superior to me or superior than me. I've already answered that. Okay. Iron is dash than any other metal. Most useful, more useful, the more useful, the most useful. Wiser means samajhdar. Wise, samajhdar. Suvoshri, please answer. Iron is more useful than any other metal. Any other metal से सबसे ज्यादा useful कौन है? से ज्यादा useful, सबसे ज्यादा नहीं होगा. Any other metal से ज्यादा useful iron है. So more useful, the more useful नहीं होगा. भावना, once in a blue moon का मतलब होता है बहुत rarely. Once in a blue moon. For example, मैं बहुत ही rarely अपने friends से मिलती हूँ. I meet my friends once in a blue moon. I study once in a blue moon. I read a book once in a blue moon. I watch TV once in a blue moon. Okay.
He doesn't know much. I know dash. Much than he does, more than he does, more than he. It is a idiom nahi hoga Paras. It is an idiom. Tarub. He knows, he doesn't know much. I know more than he does. He doesn't know much. उसे ज़्यादा नहीं पता. I know more than he does. मुझे उससे ज़्यादा पता है. Okay. So comparison हो रहा है कि he doesn't know much, इसको नहीं पता. I know more than he does. मुझे इससे ज़्यादा पता है. I think he is still ill. She looks even dashed than last week. Worse, worst, better, bad. Vishakha? Yes, ma'am. I think she is still ill. She looks even worse than last week. Yes. So guys, bad हमारे पास adjective है irregular, जिसकी second और third form होती है better, best, degree, sorry, not form. So bad is, क्या बोल दिया मैंने? Bad, worse, worst. Bad is base form, positive form. Comparative में worse आता है जो आपकी screen पे है, WORSE. और third जो superlative degree होती है bad की, वो होती है worst. I think she is still ill. मुझे लगता है वो अभी भी बीमार है. She looks even worse than last week. वो पिछले हफ्ते से भी ज्यादा worse लग रही है. बुरी मतलब हालत में लग रही है, right? So bad, better, baddest कुछ नहीं होता. ये चीज आप अपने notepads में लिख लीजिए. Bad is an irregular adjective, so its form or degrees are bad, worse, worst. बुरा comparison में और सबसे ज्यादा बुरा. The pages in this book are whiter than that book, those in that book. Today I am very nervous. Sifat, why you are nervous? And Sifat, nervous की spelling आपने NUR लिखी है, गलत है. NERVOUS होती है nervous. Meera, please answer. Yes, ma'am. The pages in this book are white than those in that book. Meera, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है. Anyone else, please answer. The pages The page. in this book are whiter than those in that book. Now, ma'am. मीरा, आप बहुत हल्की रही है आपकी आवाज. Yes, so the pages in this book, इस बुक के जो पेजेस हैं उस बुक के पेजेस से ज्यादा सफेद है. Are whiter, white, whiter, whitest, are whiter than those. And last, my shoes are prettier than hers. Answer. My shoes are prettier than hers. Hers. Exactly. So यहाँ पे we are using possessive Pronoun. hers. My shoes are prettier than hers. यहाँ पे हर तब यूज होता जब shoes होता. वहां पे her shoes. My shoes are prettier than her shoes. So because हमारे पास object नहीं है इसलिए हम hers का यूज कर रहे हैं. And that is all for today. Karthik on top with 141 coins. Srinivas, Tarub, Yogita, Suvoshri, Pratap, Rachit. Good.
All right. Any question, guys? आज हमने intro adjectives करे हैं, positive comparative degree of adjective. If you still have any questions, feel free to ask and keep practicing, क्योंकि आपका इस पे जो command अच्छा होगा वो practicing से ही होगा. All right. Actually, I would like to say one point, ma'am, which I spoke in the previous class. Only one point out of all those points. Ma'am, nowadays means government says like we are supporting women. That's why we are giving equal reservation to the women in all the fields. To women in all the fields. But I think, ma'am, this is absolutely wrong, because, ma'am, in the earlier days, they don't have some kind of they don't have knowledge, or they didn't have knowledge, or didn't have ability to think by themselves. They used to depend on others for judgment or for decision, whatever it may be. But nowadays people are thinking by themselves. They become like independent people, women. So government also thinking like, so now we should treat the women separately. We should not. Yeah, that's why I think government is giving these kind of reservations. Yes, right. And I think it is good. Equality is good, and it's very good that women are I'm getting. saying equality is good, but we cannot say that it is because of the respect towards government. It is because the government also thought like they're thinking independently. They're not dependent on others. Exactly. Yeah. Yes, right. So, guys, I'll see you in the evening session. We'll have a talk about this topic, Women's Day, definitely. So keep your speech for the evening session. We'll definitely discuss some points. Ma'am, I have one doubt. Yes, If Vishakha? you have time, yeah.